just because it's a Hindi film, I don't want to do it. Right. If something convincing and good enough comes my way, मैं definitely करूँगी. We have always been Indian actors. We should all be called actors. When Sridevi ji, Hema Malini ma'am, Jayaprada ma'am, you have so many people. Rajni sir also for that matter of fact did so many films in Hindi. Kamal sir did. You don't call them pan-Indian actors. आज जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिनके साथ मेरा एक कॉन्वर्जेशन है, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स दैट आई हैव सीन. पैन इंडिया एक्टर्स की हम बात करते हैं, बट ये इन्होंने मतलब जब ये वर्ड भी नहीं आता उससे पहले से वो शी इज़ बीन एक्टिवली वर्किंग इन तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड इवन इन हिंदी. सो नाउ शी इज़ बैक विद अनदर हिंदी फिल्म मैदान एंड वी आर टॉकिंग टू प्रियामणि मैम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डीएनए. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much for having me. ओके, सो पहला सवाल यही बनता है कि मैदान दिस इज़ योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ योर थर्ड हिंदी फिल्म. Yes. थर्ड हिंदी फिल्म आफ्टर आर्टिकल 370. उससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस, रक्त चरित्र, ओके रक्त चरित्र एंड रावण. हाउ कैन वी फॉरगेट रावण. बट मेजर रोल्स की अगर हम बात करें, एक्सेप्ट फॉर चेन्नई एक्सप्रेस की हम बात करें, तो दिस इज लाइक अनदर मेजर रोल दैट हैज बीन कमिंग. टेल अस योर एक्सपीरियंस शूटिंग मैदान. बहुत अच्छा रहा. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर बोनी कपूर सर टू कॉल मी पर्सनली एंड से कि ऐसा एक मूवी मैं कर रहा हूँ एंड आई फील यूड बी राइट फॉर द रोल. एंड हम लोग ऑफिस आए, बोनी सर से मिले, फिर अमित शर्मा से मिले, फिर उन्होंने स्टोरी बोली. देन आई थिंक विद इन 2-3 days वो नरेशन के बाद लुक टेस्ट की एंड 1 week later आई थिंक वी स्टार्टेड शूटिंग ऑफ द फिल्म. सो मुझे तो मतलब माई एक्सपीरियंस वॉज फेनोमिनल. आई शॉट फॉर अबाउट 15 days फॉर द फिल्म एंड बहुत ही अच्छा लगा. एंड आई कांट वेट फॉर पीपल टू सी इट व्हेन इट कम्स आउट. ओके, एंड जब हम एक फिल्म की बात करते हैं, एक बायोपिक की बात करते हैं, जिस अबाउट सईद साहब एंड फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, वेर ही इज लीडिंग अ टीम ऑफ हिज अंडरडॉग. तो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स में इट्स अ वेरी मच अ मेल डोमिनेटेड जो हम देखते हैं कि फिल्म है, तो कहीं आपको अपने रोल को लेकर एप्रीहेंशन था कि आपका जो रोल है, यू आर प्लेइंग वाइफ ऑफ सईद साहब, सो कहीं आपको रोल के लिए एप्रीहेंशन था कि यार ये कैसा मतलब उनका इमोशनल सपोर्ट रहेगा, बट what was it exactly? कहीं आपको कुछ था about See, it was not only the factor that एक family establish करने के लिए उन्होंने किया है. That also forms an equally important bond in the film. तो जब मुझे ये स्टोरी बोला गया था, I said yes, I would like to be a part of it, irrespective of, see, for the audience they could feel that maybe the length उतना ज़्यादा नहीं है, given the factor that this is a movie based on the sport. But ये भी एक important factor है in the film, so which is why I obviously said yes. And to work opposite Ajay sir, who will say no? After Raavan, it was Chennai Express, a cameo, a song, and then it was like कि आपने until the Family Man, मुझे लगता है कि उससे पहले जो gap था, you waited for the right opportunity and that you got with Family Man. And then it's Article 370 now. How do you look upon to the career that has been carved in Hindi film industry? So far so good. I'm quite happy with the selection. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So I can't wait for once Maidaan comes out, we'll wait and see if there are more prospects happening. But हाँ, I mean there are a lot of offers that have been coming my way. But मैं अपना time लेके मैं कर रही हूँ. Just because it's a Hindi film, I don't want to do it. Right. If something convincing and good enough comes my way, मैं definitely करूँगी. But so far so good. There's no complaints. तो एक बात बताइए, सो पहले it was Chennai Express, then it was जवान. So ये जो जवान का था, मतलब what is it? मतलब बोलते ना कि कैसे ये हुआ. इज इट कि शाहरुख खान साहब ने तभी आपको कुछ प्रॉमिस किया था कि वी विल कोलैबोरेट ऑन समथिंग बिग, ऑन समथिंग वेरी बिग, एंड इट हैपेंड. व्हाट वाज एग्जैक्टली? नो, ऐसा कुछ नहीं था. आई थिंक इट जस्ट फेल इनटू माय लैप एट द राइट टाइम. मैं उस टाइम पे मैं बैंगलोर में थी, घर में थी, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुकेश छाबरा, हु इज़ द कास्टिंग डायरेक्टर. उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसा, तभी उन्होंने मुझे मूवी के बारे में कुछ बोला नहीं था. ही जस्ट सेड देयर इज़ अ मूवी एंड मुझे लगता है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज़ अ वेल विशर ऑफ माइंड, वेरी ट्रू वेल विशर. तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा एक मूवी है, मैं कौन सा क्या है मैं बाद में बताऊंगा, बट तुम एक बार सुनो, एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय एटली. आई सेड एटली सर डायरेक्ट कर रहे हैं. ऐसे ठीक है. तो मुझे लगा कि शायद तमिल फिल्म होगा, बट ऐसे तमिल के लिए हिंदी के कास्टिंग डायरेक्टर क्यों बुला रहे हैं. ऐसे ठीक है, जो भी है, लेट्स सी. एंड देन ऐसा हुआ कि आई थिंक बाय इवनिंग और समथिंग एटली सर गेव अ कॉल एंड वी वर वाया जूम. उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे स्टोरी बोली, एंड आई सेड ओके, दिस सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नो प्रॉब्लम. एंड देन इमीडिएटली मैंने मुकेश छाबरा को वापस फ़ोन किया एंड आई सेड अरे दिस इज़ अ नाइस मूवी, हाँ मैं करूँगा, आई डोंट माइंड डूइंग इट, but I would like to know who are the other cast members. So he said बाकी the 6 लड़कियों का अभी तक कास्टिंग हुआ नहीं है,
बट वी आर अप्रोचिंग यू फर्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ लक्ष्मी, तो अगर तुम करोगी तो अच्छा रहेगा. आई सेड ठीक है, आई एम गेम, डोंट वरी अबाउट इट. ही सेड ठीक है. Then I said, but who are the other characters? At least tell me who's the hero ना. At least वो तो मुझे बोलो. Then he said, see, unofficially मैं बता रहा हूँ, but it's शाहरुख खान. I said, what? He said, yeah. I said, then sign me on. मुझे कोई problem नहीं है, because I also know for the fact that it is a story about Azad and the girls. Right. And it's not just एक establish करने के लिए, we're not just the thing. Yes, we yes. have something to think, because there's something. Some injustice has been done to Yes, us, yes. which is why he's taken up the cause, Right. and we are fighting for, all of us साथ मिलके we're fighting जी, for the जी, cause, जी. and we're all highly skilled, There's a trained. proper character arc. Yes. So that's how it fell into place, and I think after that I came to Mumbai and met at least all of us. In fact, I think the first time all the girls, all of us were meeting each other was during the script reading. Okay. So we went sequentially. तो पहले जो मेट्रो सीक्वेंस था, तो वही उसी का रीडिंग पहले हुआ था एटली सर के ऑफिस में. तो एटली सर थे, उनके असिस्टेंट थे. शाहरुख सर आए नहीं थे, बिकॉज आई थिंक ही वांटेड टू कम एट दैट टाइम, बट आई थिंक ही वाज बिजी विद समथिंग एल्स, सो ही कुडंट कम. So that was the first time I'm meeting all the girls, and we just got along like a house on fire right on day one. Reading के time से ही we got along so well that I think they've all of us have become and all of us have become each other's extended family. And whenever we get time, and all the 6 of us are there in Mumbai, we definitely make it a point to meet each other at least एक coffee के लिए, या तो dinner के लिए, या किसी के घर में जाके हम we'll just spend some time together. जी. And what was the moment when you actually reunited with Shahrukh Khan again? मतलब चेन्नई एक्सप्रेस, it's like 6-7 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 10 साल के बाद. So it was like ज़्यादा टाइम हो गया. What was it? पहले मिलते ही एकदम से यादें ताज़ा हो गई. What was exactly? No, I mean I remember I met him during the metro जी. का टाइम पे ही, एंड वी वर डूइंग द इंटीरियर्स ऑफ दैट, तो सेट में कर रहे थे. तो वी वर ऑल इन फिल्म सिटी, एंड देन सडनली वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम सेइंग, सर आपसे मिलना चाहते हैं. आपसे मतलब आई मीन ऑल द गर्ल्स. एंड दैट टाइम ही वाज नॉट इन दैट लुक. वो अब बॉल्ड लुक में थे नहीं उस टाइम पे. आई थिंक ही हैड जस्ट come into the set to see how it looked and everything. Then they said, sir would like to meet you. तो हम 6 लोग नीचे उतरे, seeing each other, क्या है. Then Shahrukh walks out of the set, he comes, and obviously I was the first one to walk into the set. He looked at me, gave me the warmest of the hug, he kissed me right here, and all he said was thank you for doing the film. तो उसके बाद और क्या चाहिए. Then after that then he made sure that all of us got along with each other. एंड तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई थिंक सिंस हम लोग एक टीम है, आज़ाद एंड द गैंग, सो वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, सो लेट्स हैव डिनर टुगेदर एवरी डे. तो ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज्ड टू हैव डिनर टुगेदर. जब भी एटली सर डिनर के लिए ब्रेक करते थे, सो एटली सर, प्रिया हिज वाइफ, शाहरुख सर एंड हम 6 लड़कियाँ, हम लोग एक टेंट पे बैठ के वी यूज्ड टू हैव गुड डिनर. एटली सर स्पेसिफिक बिकॉज ही लाइक साउथ इंडियन फूड, तो ही यूज्ड टू गेट साउथ इंडियन फूड कुक्ड फॉर हिम. जो भी शाहरुख सर के लिए जो भी आता था, जो भी सेट में हमारा खाना जो भी था, तो वो हम लोग सब साथ में इकट्ठा एक साथ बैठ के हम लोग खाते थे. अभी हम वी आर इन दिस डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे हम पैन इंडिया टर्म जो हम बड़ा यूज़ करते हैं, बट देखा जाए द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ टैलेंट्स हैव बीन हैपनिंग सिंस एजेस. हमारे यहाँ पे हम द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड आर बीन फ्रॉम साउथ. मतलब हेमा मालिनी मैम, रेखा मैम, एंड जयप्रदा जी, श्रीदेवी जी, they all are always there. बट कहीं ना कहीं ऐसे हम स्पेशली इन दिस एज, इन दिस टाइम, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे आप हो गए, समांथा हो गए, कहीं ना कहीं हम देखते थे साउथ जो हम देखते, जो एक्ट्रेसेस फ्रॉम साउथ आर सो नॉट इनटू कि हाँ भाई हमें बॉलीवुड फिल्म करनी ही है, या वी आर गोइंग इनटू दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. व्हाट इज योर टेक? मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है द फिल्म मेकर्स और द राइटर्स आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क टू राइट सच मटीरियल जैसे हम, जिसको आप हाँ कह सके, जैसे स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट जो हम कहते हैं वो लिख सके. व्हाट वाज एग्जैक्टली? See, that's a question I think they have to answer, because जहाँ तक हमारा सवाल है, we are more than happy to venture out into other languages as well. And I think a lot of girls are doing significantly very good work here also in the South. I mean, in the Hindi industry. But see, I'm not the right person to say whether we are getting the right scripts or probably. I think for me, just because it's a Hindi film industry, जो भी projects आता है, ऐसा नहीं कि मुझे करना है. I would like to,
if it's a good project and if it is good enough for us to, I think the girls are also quite, they know what to say yes to, and just because एक हिंदी movie है या हिंदी industry है, they don't want to commit to everything. I know it, Hindi project matlab, yes, you have a wider range of audience and everything, all that is there, but apart from that, I think the girls also, they want something significant to be a part of, to show in their filmography ki aise ek movie mein I was a part of it, or aise ek web series mein I was a part of it. So I think they're quite they're also waiting for the right thing to come their way, so that's okay. I think even if it takes time also, no problem, but I don't think एक gap अभी ऐसा आ रहा है. I think all the artists and technicians from the south, चाहे वो web series हो, चाहे वो movie हो, I think they're all of them, be it females, be it males, I think everybody is getting equal amount of work. जी. So मैम, जैसे पहले भी कहा था कि आजकल हम ये वर्ड बड़ा यूज़ करते हैं, पैन इंडिया. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस टर्म? मतलब कई हमारे ऐसे एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट जो लाइक कि पैन इंडिया, व्हाट इज दिस टर्म? हाउ डू यू लुक अपॉन टू द फैक्ट? अच्छा लगता है सुनने में? व्हाट इज इट? आई इनिशियली शायद अच्छा लगा होगा, बट अभी आई थिंक वी शुड start calling everybody as Indian actors. We all are Indian actors at the end of the day. I don't know who came up with this, who coined this term pan-India. We've always been Indian actors, but yes, we've been segregated by our respective languages, and जो films हम हमारे language में करते हैं, भले ही वो dub होके बाकी languages में आते हैं, but you were known for your language before. But now that all the technicians and all the artists are getting work equally amongst all the other industries as well, I think we should all be called actors and technicians. I don't think abhi zamana gaya ki, I think it's enough is enough being called pan Indian. I think we all are actors at the end of the day, chahe wo, and that point of time you weren't called pan Indian. Correct. When Sridevi ji ya Hema Malini ma'am, Jayaprada ma'am, you have so many people, coming at Rekha ji, so many people, even they created a mark for themselves, they created a name for themselves in the north, I mean in the Hindi industry. Rajni sir also for that matter of fact did so many films in Hindi. Kamal sir did. You don't call them pan Indian actors, or you never called them pan Indian actors that time. Why are we being called pan Indian actors now? I think we just should be called actors, that's it. जब हम डिफरेंट इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक खूबी देखते हैं किसी इंडस्ट्री में, कहीं पे वर्क करने का प्रोफेशनल एथिक्स कुछ हम देखते हैं. सो ऐसे कुछ आपने डिफरेंशिएट किया हो, समथिंग दैट यू लाइक इन वर्किंग वाइल इन हिंदी फिल्म में, समथिंग दैट यू मिस वाइल वर्किंग इन हिंदी इंडस्ट्री फ्रॉम साउथ, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, मैं कुछ मिस नहीं करती. आई एम यूज्ड टू वर्किंग इन बोथ द अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट वन डिफरेंस, आई मीन obviously आपके directors different है, co-star different है, your language is different. Leaving that aside, the working style is pretty much the same, but I also feel that अभी Bollywood में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत sync sound होता है, बहुत, be it in web series or some of the films that we worked on, especially now in some portions of Maidaan and Article 370 was sync sound. Jawan we all had to, I mean दो थोड़ा बहुत डबिंग था उसमें, बट प्रिडोमिनेंटली इट वाज सिंक साउंड, एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ देयर ओन वॉकी टॉकी, सो इट्स अ लिटिल क्वाइटर यहाँ पे. whereas in the south it's people just keep talking whenever they need to, but yes, during action and cut they all very quiet, but otherwise, और जब भी हम लोग even in the south when we are saying some 8 बंदा वहाँ पे टुंग 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 करके कुछ कर रहा होता है, या सेट का बंदा कुछ कर रहा होता है, या कुछ तो होता है, but that's all part and parcel of it. Yeah, but that's okay. We've grown up even in that also, so that's okay. So how do you look upon to the script, जैसे जिस तरह का आपका कैरेक्टर टर्न आउट, अगर आप कुछ बताना चाहे फैमिली मैन 3 के बारे में, about your character? I can't say anything at this. No, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती because all I can say is हम लोग बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो maybe we can talk about it at that time. But now it's a little too early to talk about it. ठीक है. So apart from Maidaan, is there any other project that you're working or releasing this year? No, well, releasing to I have a Tamil film called QG which might come out this year. Then there is also another Hindi project which we already finished shooting, but वो भी I can talk about it जब आएगी. Yeah. And then I have a couple of South projects. So looking forward, ma'am, and looking forward for another interaction. ऐसे interesting interaction के लिए thank you so much for joining. Wish you all the best. Thank you so much. That's it from DNA. Keep watching.